स्वागत है आपका पे चर्चा पॉडकास्ट की चौथी इनिंग्स में, जहां एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के मैदान में खेलने वाले जाबाज खिलाड़ी सामना करते हैं हर स्ट्रेटेजिक बॉल और जीत कर आते हैं वो हर एक बाजी, हर इम्तिहान और हर एक चुनौती। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टिक अराउंड विद अस टिल द लास्ट ओवर। मैं हूं निकिता चक्रवर्ती, आज की होस्ट। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का, मिस्टर भूपेश दहरिया बॉस, a respectable alumnus of MANIT who is striding into the pitch like a seasoned cricketer, ready to face any challenges. He is the managing trustee of Aegis School of Data Science, founder of Assistify and MUNI campus. Get ready, listeners, as we witness his masterful strokes of knowledge and insights that promises to shape the game of education and technology. Welcome, boss. How are you doing? Very good. Nikita, thank you so much. I'm feeling really great to be here and talking to Junior of Manet. So that really invokes my nostalgic feeling. It's great to connect with you guys. Boss, it's an honor to have you here with us. Boss, may we start with the podcast questions? Yeah, please. Uh, as college days are often some of the most memorable times हर किसी के जीवन में. So being an alumnus of MSCT, how does it feel, boss, to revisit the college life memories after all these years? So I think every moment of my life I cherish the time which I spent in Manet. चाहे वो खच्चर की सवारी हो, चाहे परिवर्तन में ड्रामा किया हो, चाहे हॉस्टल का टाइम हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट जो टाइम था, वो 4 साल जो कॉलेज में बिताए हैं वो था। गिवन अ चॉइस फिर से मैं 4 साल वापस हॉस्टल में जाके जीना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ़ की जो फाउंडेशन है, जो लर्निंग है, वो सारी की सारी सिर्फ़ उस कॉलेज से बिल्ड हुई है। लास्ट डे कॉलेज में था, उस टाइम पे भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि भई जो कुछ गेन किया है उस कॉलेज से गेन किया है। जो कुछ बनेंगे उसी कॉलेज की वजह से बनेंगे। और आज 30 साल बाद भी वही स्टेटमेंट बरकरार है। तो बहुत अच्छा टाइम कॉलेज का था। बिल्कुल बॉस, कॉलेज के दिन हमेशा यादगार और खास होते हैं। हम कई बार इस चीज को भूल जाते हैं और इतनी जो भी दिक्कतें आती है पढ़ाई, इसके साथ हम भूल जाते हैं कि हमें मस्ती भी करनी है। राइट। तो I'm sure, boss, कि you have countless memories and insights even now. तो कोई particular ऐसा experience जो आप हमारे listeners के साथ आज शेयर करना चाहेंगे? तो ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट हैं, मतलब कॉलेज ने जो दिया है वो काउंटलेस मेमोरीज दी हैं, काउंटलेस स्टोरीज दी हैं। और ऐसी स्टोरीज जब किसी को सुनाओ तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब मैं अपनी टीम के साथ सुनाता हूँ तो उन्हें लगता है कि ये किस ज़माने की हम बातें कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस मुझे याद है कि वो पहले हम मूवी देखते थे बेताब, और बेताब में सनी देओल कुछ जंगली घोड़ों को संभालता था। वो जाके कॉलेज में समझ में आया कि घोड़े तो छोड़ो, खच्चरों को नहीं संभाल सकते हो, एक आदमी तो क्या चार भी नहीं संभाल सकते हो। तो हम लोग सभी लोग ब्रेकफास्ट लेते थे, 4 नंबर हॉस्टल में थे, 2-2 3-3 अंडे का ऑमलेट खाते थे और उसके बाद रस्से लेके घोड़ों को पकड़ने के लिए निकलते थे। तो हॉस्टल में तुमने देखा होगा इतना बड़ा ग्राउंड है और घास है, तो वहाँ बाहर से खच्चर चरने के लिए आते थे। और हम लोग 5-5 6-6 लोगों का ग्रुप बना के रस्सा पकड़ के खच्चरों को पकड़ते थे। और निकिता तुम मानोगे नहीं कि वो खच्चर को पकड़ना इतना डिफिकल्ट होता था कि हमें 5-5 6-6 घंटे लग जाते थे एक खच्चर को पकड़ने के लिए। और किसी के घुटने छिल गए हैं कि किसी की टांग पे चोट आई है, और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद हम एक खच्चर पकड़ पाते थे। और फिर वो खच्चरों को पकड़ के उसकी सवारी करते थे। कुछ लोग न्यू मार्केट जा रहे हैं, कुछ लोग कॉलेज जा रहे हैं, और ये लेगेसी हमें सीनियर से मिली थी। एक बार का हाँ, वाकया है कि उस खच्चर पे मैं बैठ के गर्ल्स हॉस्टल के पीछे सर है, मैं उनके घर चले गया और मैंने उनको आवाज़ दी कि सर आइए। तो सर ने ऊपर से हाथ हिलाया, बोले देख भाई ऐसा है कि तुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो ठीक है, बट मुझे तो अपनी इज्जत की परवाह है। तो ये एक बड़ा फनी सा एपिसोड था। तो आज भी जब भी मैं कॉलेज में विजिट करता हूँ तो फैकल्टी मेंबर्स हम लोग इस चीज़ को याद करते हैं। तो इट वाज़ वेरी फनी मोमेंट, क्रेज़ी मोमेंट।
अभी मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें कॉलेज में होती होंगी, बट दैट वाज़ अ डिफरेंट एरा, डिफरेंट क्रेज़ी टाइम। तो काफी मजेदार लगा सुन के। मतलब आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि अभी तो बिल्कुल नहीं सर, अभी तो लोग अपने मोबाइल फोन, सेल फोन्स, ये सब में बिजी है। एंड सोशल मीडिया तो इससे तो लोग और ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं, अभी कहाँ ये सब चीजों में मन लगता है। हमारे ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, हमारे ज़माने में रियल मीडिया था, रियल एक्शन था। दैट रियल वाज़ अ डिफरेंट एक्शन। टाइम, डिफरेंट एरा। Boss, we would like to hear how your time has significantly contributed to your success. Like, आपके according, reflecting on your education was, what lessons or experiences have been particularly influential in your entrepreneurial journey? So I think I was quite introvert person. Till school time, I used to purely focus on my studies, my books, and school. And I entered into this wild, wild forest called MANIT of that time, wild field. That gave me an opportunity to explore other aspects. And I thought, let me explore other aspect and improve upon other areas, which is in fact coming out of my own shell. So I took an extra effort. I got into this drama and I said, okay, let us try to really creatively channelize my energy in positive direction. Because our time, the environment was quite different, not so study friendly, right? Until unless you're so motivated, unlike today's time. So I think one of the most important lesson which I have learned, that it is not only study which can really help you to grow in your life, right? Other aspects like drama uh, can also work equally well for laying down your foundation. So today, if I see my entire entrepreneurial journey, I contribute that in entrepreneurial journey not to my studies, but the time I spent doing the drama. Right. So this is one of the most important learning I have gained from the college. The other part is, of course, I have learned the group dynamics. I have learned the various aspects of the human beings, emotions, which I have seen closely, and that was like a prototype. And then now you can really see, if you really extrapolate, you can really see the world model. So just like a large language model can really give you the insight about the world, Manit and those hostels has given me a complete view about the world. And that has also laid down a very strong foundation or a character for leading the real world or facing the real world. To give you instance, when I joined my first job, Optel Telecom, Mandideep in Bhopal, that was a optical fiber plant, and this was a production plant and heavily dominated by the unions. But I think courage, I could really handle the union. And when I really look back, I see that yes, all those 4 years, including the ragging, were preparing me for those production plants. Unlike today's very white collar jobs, you didn't had those kind of white collar jobs those days. You have to work on field, you have to work on plants, and all those kind of stuff. So मतलब जब हमारा रैगिंग पीरियड खत्म हुआ था, तो प्रोफेसर मित्तल ने ये चीज़ बोली थी कि देखो ये जो तुम्हारी रैगिंग हुई है, ये तुम्हें इसलिए तैयार की गई है कि जिससे कि तुम कहीं भी किसी भी प्रोडक्शन प्लांट में सर्वाइव कर सको, जिंदा रह सको। और वो चीज़ मुझे याद आती है कि उन्होंने ये चीज़ क्यों बोली थी। Boss, we would move to the like entrepreneurship जो है वो काफी ज्यादा ग्लैमराइज्ड है अभी मार्केट में हर जगह। तो पर हम सब जानते हैं कि कितनी सारी चुनौतियों के साथ आता है। और तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या हो सकता है? मिसकॉन्सेप्शन बोल लो या मिथ बोल लो या डिल्यूजन बोल लो, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आपको जो मार्केट में बोला जाता है, जितने भी इडियट मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो एंटरप्रेन्योर बनो, पैसा कमाना है तो एंटरप्रेन्योर बनो,
नौकरी का क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पैसा कमाना है विदाउट रिस्क, तो जॉब से बेहतर सिक्योर कोई और तरीका नहीं है, राइट। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो पैसा अलोन कैन नॉट बी मोटिवेशन। मौत और पैसा कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंटरप्रेन्योर आपको तब बनना चाहिए जब मनी मेकिंग इज नॉट योर प्राइमरी कंसिडरेशन, राइट। आप एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बन रहे हो कि आपको पैसा बनाना है, वो बाय प्रोडक्ट है। आप एंटरप्रेन्योर इसलिए बन रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ चेंज ला सकते हो, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई इनोवेटिव चीज़ को मार्केट में ला सकते हो जिससे सोसाइटी का, बिजनेस का, लोगों का भला हो, ठीक है। और उस प्रोसेस में जब लोगों का भला होगा तो आपका भी भला होगा। बट उसका प्राइमरी मोटिवेशन पैसा नहीं है, उसका प्राइमरी मोटिवेशन प्रॉफिट नहीं है। तो बॉस, moving ahead, since you have established the Aegis Graham Bell Award, तो कोई ऐसा पास्ट विनर है जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए होंगे? बहुत सारे इनोवेटर्स हैं। इनफैक्ट एवरी इनोवेटर्स एक्चुअली टचेज मी एंड इंस्पायर्स मी। So last almost 14 years, I have seen hundreds and hundreds of innovations, entrepreneurs, innovators, intra-entrepreneurs, and they have also shaped my life and my thinking after college. Right? So I am truly inspired and humbled with the kind of work they have done. Uh, One which I really mention in almost every forum is Dr. Geeta. So Dr. Geeta is also a researcher. She used to work with Xerox Research Center along with Dr. Manish Gupta, who is now current director of research with Google. So both of these guys were working on a project called uh, detecting the breast cancer in Xerox lab. And eventually, after Xerox, Dr. Geeta started her company called Niramai. So Niramai, they have developed a deep learning model, and with this deep learning model, what you do, you can use your mobile phone and just put a thermal camera on top of this mobile phone. And thermal camera will cost you roughly around 15 to 20,000 rupees. Android phone will cost you 10,000 rupees. So maybe 25,000 to 35,000 rupees. A multi-million dollar cancer detection device is ready. Right? And this underhood, this uses the deep learning model, which is able to really detect the breast cancer. So whether you are in sitting in a mall or you're in office or anywhere, there's no touch, no intrusion into your privacy, right? And typically a cancer detection machine आपको कम से कम 12 से 15 करोड़ रुपए की कॉस्ट करती है, ठीक है। कैंसर एक एपिडेमिक की तरह ग्रो होते जा रहा है। बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, और जब तक डिटेक्शन होता है स्टेज 3 और स्टेज 4 पे पहुंच जाते हो, इसके बाद आपकी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और कैंसर डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज़ हैं और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो मेट्रोज के अराउंड है। तो इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रपोजिशन, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट बोथ। So using this deep learning model, they are trying to democratize this cancer diagnostic. Right? So I think that is something amazing work Dr. Geeta has done. She got the funding from Japanese fund, and they have now she is being appreciated across the world. So तो मुझे लगता है कि हाँ, इस तरह की इनोवेशंस, इस तरह के एंटरप्रेन्योर होने चाहिए जिन्होंने अपने नॉलेज को भी यूज़ किया, अपना एजुकेशन यूज़ किया, एंड शी इज़ क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट, right? And she will be leaving a legacy behind that. So this is a perfect, a deadly combination. So rather than we just hearing the stories from America कि वहाँ डीप लर्निंग और एआई कैसे यूज हुआ है, हमारे देश में लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। एक मुदित करके एक है राजस्थान में, उसने चिकन फैदर से के वेस्ट से फैब्रिक बनाया है। और वो जो फैब्रिक है, वो फैब्रिक का मेरे पास भी एक शॉल है, और वार्म रहता है। उन्होंने आर्मी को सप्लाई किया है, जो सियाचिन जैसी जगहों पर कोल्ड वेदर में भी वो उनको गर्मी देता है, ठीक है। तो
ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का है एक बहुत बड़ा एरिया है, राइट? तो और नाउ इज ऑल्सो जनरेटिंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Because like building any prominent institution from the ground is not an easy work. And so, like, how was like being the managing trustee of AG School of Data Science? How did this idea come about? Again, this idea germinated while I was studying in college. Then I opted and joined Optel Telecom. There I really got to work in telecom. And very quickly I realized that yes, engineers, they think in one direction. They only think about technology, and that too also obsolete technology. Uh, and we have not been exposed to other aspects, which is management aspects, regulatory aspects. So I've been thinking of, I started thinking that we need to really start a telecommunication management institution in India. Uh, and then I reached out to Bharti Airtel Group. I wrote a letter to Sunil Mittalji, and then eventually he passed it to Rajan Mittal. Rajan actually met me. He called me up in Indore. So we had a good discussion. And then Rajan actually liked the idea. So I shared with him that, look, not all of us we are Einstein, and we can only build what we have seen. So most of the people, those who are employed by TouchTel, that time Airtel was a TouchTel, can only provide the solutions what has been fed by the vendors. So their education is provided by the technology vendors, right? Because they want to sell the technology. But unfortunately, they have all bought the technology which was junk or obsolete technology, and we can't really hold them responsible. So I want to start an institution which will give them idea about the futuristic technology and other aspects, regulatory management aspects. So the idea was to really build a cross-functional Renaissance leaders. So cross-functional leader who will know almost all aspects about the technology and business, so that they can really build a good sustainable business. Uh, so he really liked this idea. He gave me 15-minute time, but sat with me for almost an hour. Very next day, he invited me Delhi, and then Bharti Group supported us. So that's how we started Aegis School of Telecom Management in Indore. That was in 2002. Long story short, we shifted to Bombay, and then 15. While I was sitting in Bell Award, I used to really see how analytics, advanced analytics, and machine learning is getting infused into a lot of innovations. So 15, we thought of starting India's first postgraduate program in data science. Uh, and we infused a lot of technology like machine learning, deep learning, big data. And unfortunately, that time there was no faculty available here in India. So we got a lot of faculty from Europe and other part of the world, right? And that's how we started India's first data science program, and then it became history. Today, almost every company, every fintech company or every company, you'll find Aegis alumni is working. Uh, the challenges, typically what I particularly face setting up the institution is regulatory framework, because if you have to set up any education institution, you need to really take the various government approvals. You need to align with AICT or UGC or those bodies. I have nothing to against with these bodies, but they bring a lot of the bureaucratic structure, and in this whole process, you lose the autonomy in terms of curriculum design. And by the time you change the curriculum, the program becomes obsolete. So that is number one. Second problem, you need to really offer 2 years master's program. And I was not in opinion of offering 2 year. We wanted to really go on the UK way, which typically offers 1 year master's, right? Of course, we maintain the credit structure, which is 45 credit unit, which all North American universities offer. So number one was freedom into curriculum. Number two was, of course, 1 year master, which was not permissible even today, right? Third thing, of course, credit transfer. So let's say for any reason you drop out of the program and you have to really go and do a job and then come back, you lose all the credits. So the credits
not accounted, right? And a credit structure system is there in the North America, but now under new education policy, we will also have this kind of freedom. So there were a lot of reasons, mainly these reasons, and we said, okay, let us keep ourselves away from any government or regulatory body, and we'll offer 11-month PGP program, and that's how Aegis was started. So initially we had a lot of trouble because everybody used to ask about what is affiliation and all those stuff, which slowly and gradually now nobody asks. And then later on ISB, during that time ISB also started with 1 year PGP, and ISB also kept itself away from various university and AICT stuff because of these reasons which I told you, right? Uh, the good part of keeping ourselves away from this regulatory clutches is that we could really build a program which is in tune with the industry. We could really change curriculum very quickly, right? So let's for example, today transformer network is very popular. So we don't have to really go through a bureaucratic structure and try to get the approval. Now we can really just introduce transformer. And that decision even a faculty can really take. But I think now this kind of autonomy is being offered under UGC and AICT as well. Slowly and gradually, India is also moving toward that path. But in 2002, way back then, it was too bureaucratic. Hope I am able to answer you. Yes, boss, definitely. Like, hearing the transforming an idea into such a prestigious institution shows your determination, boss. And एज स्कूल ऑफ डेटा साइंस की जो शुरुआत की आपकी कहानी कही दो तो बेहतरीन लगी ही and one more like it would be imperative to understand the perseverance required to all the listeners especially. Yes, boss, definitely. Um, boss, like as a leader managing Aegis knowledge trust, what are the specific qualities you look up for before building a global team? Any specific qualities you want in a person to be there? So one of the most two, three things I really look into the person. So now I've built a team in US, UK. I got a couple of co-founders with me. One is value. कैरेक्टर क्या है बंदे का, राइट? अगर कैरेक्टर सॉलिड है, वैल्यू है, तो कोई भी चीज़ बन बिल्ड कर सकता है। आज ये चीज़ फेल होगी तो कल वो फेल होगी। और वैल्यू सिस्टम है तो अनएथिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर बिजनेस बिल्ड करना है तो इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग राइचस, इट्स अबाउट doing the business in a right way. And ethics is one of the most important thing, and that will come from the very strong value system. So and of course second thing is learnability. अगर उसे नहीं भी आता है बट क्या वो क्यूरियस है और क्या उसमें लर्न करने की डिजायर है, ये दो चीज पैरामाउंट है। एंड ऑफ कोर्स थर्ड थिंग इज एम्बिशन। सो ये दो तीन चीजें हैं जो मैं किसी पर्सन में देखता हूँ। बाकी रेस्ट एवरीथिंग कैन बी एक्वायर्ड, नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, स्किल कैन बी गेन्ड, बट वैल्यू लेके आना, कैरेक्टर लेके आना, एम्बिशन लेके आना, लर्नेबिलिटी लेके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोपोजिशन होता है। यस बॉस, कई बार लोगों को काफी नॉलेज होता है बट हैविंग दैट सेट इन कि दे फॉरगेट कि दे नीड टू लर्न मोर, लाइक बॉस कंसीडरिंग द डोमिनेंस ऑफ एआई इन द जॉब मार्केट, अभी ऐसा कहते हैं कि सारे जॉब्स एआई ले लेगा, पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ के कोई फायदा नहीं है, कंप्यूटर साइंस लेने से पहले हम लोग सोच रहे हैं, तो राइट। डज इट एक्चुअली मैटर लाइक बॉस एआई का इम्पैक्ट मुझे क्या लगता है सकता कि ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी आप अगर ये देखो कि अभी जो कुछ ये सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। तो स्टिल जो एआई है आज की डेट में, आप उसको ये समझो कि इट इज essentially arithmetic operations. So what outcome you're seeing out of chat gpt is basically matrix and vectors multiplication, right? So machine does not know that it is doing some intelligence stuff. Machine does not understand whatever you're feeding, but this mathematical operation is giving you the illusion that this outcome is so magical, so transformative, that it really creates a wow impact for you.
बट मशीन को उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो क्या कर रहा है, उसके लिए सिंपल नंबर्स है, राइट। जैसे जो हमारी पिक्चर्स है वो सिंपल नंबर्स है मशीन के लिए। तो ये कहना कि जो एजुकेशन है वो फ्यूटाइल है, वो बेकार की बातें हैं, क्योंकि अभी सिर्फ रिसर्च एआई में हुई है, अभी मटेरियल साइंस में होनी है, ठीक है, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में होनी है। अभी हमारी रोड्स को तो एआई बनाएगा नहीं, ना रोबोट आके बनाएगा। एयरपोर्ट को एआई ठीक करने वाला नहीं है। एआई बता सकता है कि भाई ये स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, ड्रोन आप लगा सकते हो, वो जाके रोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट रोड की क्वालिटी को उसको नोटिस देके उसको बनाना तो सिविल इंजीनियर्स नहीं है ना, ठीक है। गांव में जो खेती है, इतने छोटे छोटे खेत में रोबोट तो आके खेती नहीं करेगा। तो जो हमारी ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, जो हमारा जो परसेप्शन है, जो सोशल मीडिया में जो चला आ रहा है, यूट्यूब पे हम रोज सुनते हैं, ठीक है, मेरे से कुछ बेवकूफ और लाके बोल देंगे, कुछ चीजें बोल देंगे, अपना ओपिनियन कर देंगे, एंड देन दिस बिकम सो डोमिनेंट दैट यू पिक एंड चूज, राइट, विच इज सेलेक्टिव पिकिंग एंड चूजिंग। सो यू विल पिक अप दैट पीस कि हाँ यार ये उन्होंने बोला था कि भाई अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं है, तो वो एनवीडिया के सीईओ ने बोल दिया, तो वो ये सब चीज़ों को हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। मैंने अभी जो तुम्हें समझाया कि भाई जो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत होगी, वो उसकी स्किल्स बहुत एडवांस लेवल की स्किल्स चाहिए, एवरेज आदमी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज जो कोडिंग है वो तो चैट जीपीटी लिख देगा, आपको पायलट लिख देगा, तो एवरेज आदमी क्यों चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे वी एज ए कस्टमर, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर के लिए पे कर रहे हैं, तो हम इस चीज के लिए थोड़ा ना पे कर रहे हैं बैड क्वालिटी के लिए, हम तो गुड क्वालिटी के लिए कर रहे हैं। इट डजंट मैटर वेदर दैट सॉफ्टवेयर इज रिटन बाय द एआई और वेदर इज द ह्यूमन बीइंग, और whosoever is writing that software is he taking the help of co-pilot और वो खुद लिख रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो एज ए कस्टमर हमको एक बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, बेटर देन बेस्ट चाहिए, उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, और उसके लिए लोग एआई यूज करेंगे। सो चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, सब में अभी डीप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सब में बहुत कुछ काम बाकी पड़ा हुआ है। जो आज हम आयरन बनाते हैं, जो स्टील बनाते हैं, उसमें जंग लगता है, भाई मटेरियल साइंस में बहुत कुछ काम करना है। जो हम ब्रिजेस बना रहे हैं वो ब्रिजेस गिर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं। बॉम्बे में निकल जाओ तो कोई रोड नहीं मिलती जिसके ऊपर गड्ढे नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी गांव में भी रोड्स अच्छी हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे कि ये देश जो 15 मिलियन इंजीनियर निकालता है, उस देश में दिया तले अंधेरा हो रहा है, तो फिर सारे इंजीनियर्स के ऊपर लानत है। सिविल मैकेनिकल, तो सारे इंजीनियर्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, सारे इंजीनियर्स को एआई डेटा साइंस नहीं बनना है, वो गलती हम नहीं करें। और वैसे भी प्लेसमेंट अगले कुछ सालों में देखना कि सबसे बेटर प्लेसमेंट सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स का होने वाला है बजाय सॉफ्टवेयर वालों का, क्योंकि हर किसी का एक साइकिल आता है। इसका मतलब नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है, बट बहुत अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, एवरेज आदमी की जरूरत नहीं है। मीडियोक्रेसिटी विल नॉट सर्वाइव। कि ये चीज भी सही है। हमें सिर्फ एक दिशा की ओर नहीं सोचना है, सब कुछ सीखना है, सब कुछ जानना है, एंड थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना है। लाइक फर्स्ट जो नेक्स्ट ईयर एज यू मेंशन अबाउट द प्लेसमेंट्स, तो नेक्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस के स्टूडेंट्स की फर्स्ट टाइम मैनिट में जो है वो प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे। ओके, तो इट विल तो ये these are the bachelor's स्टूडेंट और मास्टर्स स्टूडेंट्स? नो सर, बैचलर स्टूडेंट्स। Bachelor's, okay. So I think again very generic advice. Of course they need to really do the project which everybody will tell, but my specific advice is, now today as an employer when I say that okay you have done this project, facial recognition का project किया है, chatbot बनाया है, ठीक है, बनाया बहुत अच्छा है, क्या मॉडल यूज किया, LSTM यूज किया, ट्रांसफॉर्मर यूज किया, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि LSTM क्यों यूज किया और ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं यूज किया, और ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया इंस्टेड ऑफ LSTM, और ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। अभी ये 2 लेयर डाला, मैंने 3 लेयर कर दिया, तो क्या होगा इसका, इसका जो तुम एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहे हो वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी मेरे को मैथमेटिक्स समझाओ। So the boil downs the point that whatever you are showing me, you should be able to explain everything. And when explanation comes, there is a deep theory and there is a deep mathematics. So my recommendation to everybody, do not just work on the library, right? Because when you use TensorFlow or PyTorch or Keras, it builds a abstraction layer, right?
It hides the, say, beautiful mathematics, which which seems a ugly mathematics for a lot of people. But that is the beauty, that is the engine. And you need to really understand deeper level of mathematics in every algorithm, every piece of activity you are doing. If you are able to do, then definitely any employer will hire you. Because what is the differentiation? Every project you are doing, every other guy is doing. और वो 12वीं फेल बच्चा भी कर सकता है, उसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है. तो वाइल तुम जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट को भी केगल के बियॉन्ड करना है. तो रियल कंपनी के साथ, रियल डेटा के साथ वो प्रोजेक्ट करो, और डीपर थ्योरी में. तो दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट बाय शोकेसिंग प्रोजेक्ट somebody will hire you, the answer is no. So both things are very important. मतलब प्रोजेक्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के सीखने के लिए भी हमें हाँ, उस बेसिस पर और क्यों काम कर रहे करना हो? है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का कोड मिल जाएगा तुम्हें. ये चैट जीपीटी कोड लिख के दे देगा, तो व्हाट इज द बिग डील इन दैट? बिग डील है कि तुम मुझे एक्सप्लेन कर सको उसको पेपर एंड पेन पे. So we have to really not forget this paper and pen. So when I really teach, I say, okay, forget laptop, close it, use your paper and pen. I don't use PPT while I teach, because your learning improves. And there are research done by Berkeley professor, and I think there is another university professor. I'll send you those links, which we have been using it for long. So while we use paper and pen, our neuron activates. So this actually goes into deeper level of our brain, and our learning becomes much better. Your advice is bound to be invaluable. No, thank you so much. I really enjoyed this conversation, because some of the stuff I don't really talk on the public, specifically those khachar stories and other stuff. But I can open my heart, considering that this is my family. Yes, yes. But you not only motivated us, but you have like felt a lot of encouragement कि हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है और प्रैक्टिकल चीजें करनी है. प्रोजेक्ट्स अगर सिर्फ जमा नहीं करना है, बट उन पे फोकस करके उन पे काम करना है. तो Right. we have learned a lot. It was wonderful having this conversation, Nikita. First, let us now move to a fun segment where I'll just give you a topic, एक नाम, and हाँ, आपको 5-10 सेकंड में उस नाम से 3 और शब्द बोलने हैं. okay. तो Difficult. नहीं नहीं बॉस, वर्ड्स अच्छे हैं. आप हाँ, okay boss. The very first step we have the word education. okay. हाँ, So education. Okay. So education, I don't find any funny stuff in education. Education is empowerment. Education is equity, and education is about finding the God. Wow. Let's jump into the next one then, boss. It would be Bhopal. भोपाल, भटसुअर. अरे खा किधर जा रही हो? And lakes and I'm a city. तो मैंने So चार बोल दिए. विदाउट एम ए सिटी भोपाल इज नॉट देयर. wonderful. Boss, we had the up next question NICT only. एम ए सिटी. Yes, boss. एम ए सिटी हॉस्टल नंबर 6. राइट. खच्चर और पार्टीज. Wow. Okay, boss. Now the next word could be your favorite, entrepreneurship. Entrepreneurship is empowerment, right? Improving the life, and पतंगा जो आग की तरफ बढ़ रहा है. Time to get to the next question, and it would be was your favorite food, mess food rather, if you can remember, as a coach. फेवरेट मेस फूड, अंडा करी. Under. Okay, boss, I agree. वो मैं एक ही चीज अच्छा. So the very last word we have for today would be books. बुक्स. Importance. Yes. बुक्स,
food for mind, uh, window to the world, mind, and know the God. Power. Yes, sir. We often neglect reading books. We avoid and we just go through PPTs, but we need to understand the books has the power to Yes, enrich. today whatever we are, it is just because of the books we have read. Absolutely, yes. Um, well, that's it, boss. This brings us to the end of today's podcast. Thank you so much, boss, like for joining us and sharing a part of your immense knowledge and experiences with us. We hope you had a good time talking to us, boss. Wonderful. And I didn't realize that we just had conversation for almost 1 hour 45 minutes, right? Every great journey begins with a single step, and when you take your first step, you're already halfway to the destination. We hope Mr. Bhupesh Daheria Boss's story has sparked the flame of passion and perseverance in your heart. Thank you so much for listening and sticking with us till the end. Until we meet again, keep your entrepreneurial spirit high and make things happen. Thank you.